মর্নিং বন্ধুরা, আমি আজকে সকাল সকাল চলে এলাম ঠাকুর ঘরে। ঠাকুরকে তুলে আগে ঠাকুর ঘরটা করে নিই। ঠাকুরকে ঘুম থেকে তুলে দিলাম। এবার রান্না করে তারপর গাছের কাজকর্ম কিছু করব। এভাবে আমি দিনটা আজকে শুরু করলাম। ওয়েদার খুব বাজে, একদম মেঘলা ওয়েদারটা যে কবে কাটবে একদম ভালো লাগছে না। এই ওয়েদারে রোদ উঠলে খুব ভালো লাগবে। কিছু আমাদের গাছ বসানো আছে, কালকে শিবা এনেছে, বসানো হয়নি। আজকে বোধা এসেছে, গাছ বসানো হবে। போராட வாயினையே தீராத போர் முனையே என்னாலும் என் துணையே நிவா சாயாத நேர்குரலால் சாய்த்திட்ட பேரழையே பெண்ணே என் அழகே நிவா காதல் கொண்ட காரணத்தாலே காதில் பூக்கள் வைப்பதுமில்லை, ஆசை என்ற ஆரணத்தாலே பேச மறுப்பேனே. நடந்தாலே நதி என்பார், நான் உன்னில் வற்றுவதில்லை, நாம் என்றும் நாமாய் வாழலாம். நான் உன்னில் வற்றுவதில்லை, நாம் என்றும் நாமாய் வாழலாம்.
போராட வாயினையே தீராத போர் முனையே என்னாலும் என் துணையே நிவா சாயாத நேர்குரலால் சாய்த்திட்ட பேரழையே பெண்ணே என் அழகே நிவா காதல் கொண்ட காரணத்தாலே காதில் பூக்கள் வைப்பதுமில்லை ஆசை என்ற ஆரணத்தாலே பேச மறுப்பேனே நடந்தாலே நதி என்பார் நான் உன்னில் வற்றுவதில்லை நாம் என்றும் நாமாய் வாழலாம் நாம் ஓர் துளியானால் தான் வாழலாம் நீ நான் என்று பார்க்காதே தீதென்றால் ஏற்காதே பெண் தனி வழி கண்டால் தான் வாழலாம் பழமையை தொடாமல் நல்லதை விடாமல் நட 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 நடவா தெய்வங்கள் தொழாமல் அன்பதை விடாமல் நட 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 நடவா நடந்தாலே நதி என்பார் நான் உன்னில் வற்றுவதில்லை நாம் என்றும் நாமாய் வாழலாம் போராட வாயினையே தீராத போর মুনায়ে। তো বন্ধুরা গোলাপ জল বানাবো বলে একদম গাছ থেকে পিওর গোলাপ নিতে চলে এলাম। গাছটাতে আমার ফুল ফুটছিল না, শিবাওকে ট্রিটমেন্ট করিয়ে ফুল ফুটাচ্ছে। অনেকদিন পরে এই গাছের ফুলটা পেলাম, প্রচুর কুড়ি আসছে, প্রচুর কুড়ি আসছে, এই যে কুড়ি দেখুন, প্রচুর কুড়ি আসছে কিন্তু ফুল ফুটছে না। আর চল গোলাপ, টাটকা গোলাপ তুলে নিয়েছি, কালকে অনেকগুলো গোলাপ তুলেছিলাম, আজকে আরও বাকি সময়গুলো তুললাম, গোলাপ জল বানাবো। গোলাপের পাপড়িগুলো সব ফুলে আমি খানিকগুলো গোলাপ তুলেছিলাম, আবার দেখলাম যে অন্য গাছে ফুটেছে গোলাপ, তো পাপড়িগুলো সব নিয়ে নিতে হবে। একদম পিওর গোলাপ জল, সব পাপড়িগুলো নিয়ে এবার আমি ওটা
গ্যাসে বসাবো। গ্যাসে বসাইতে পারবো। এই পাত্রটার মধ্যখানে আমাকে একটা বাটি দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে এটা চারিপাশে গোলাপের পাপড়িগুলো দিয়ে তারপর এখানে আমি এক কাপ মতন জল দিয়ে দিলাম। আমার গোলাপ জল কমপ্লিট, এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো দেখুন কেমন আমার গোলাপ জল হলো। অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। জাস্ট দেখুন কালারটা এসেছে, এখনো ভাপ উঠছে, আর গোলাপের পাপড়িগুলো দেখুন পুরো একদম পুরো লাল পাপড়ি, এখন একদম নেতে সব রংগুলো দিয়ে দিয়েছে। রংটা চলে এসছে এখানে। একটু চামচ দিয়ে তুলে দেখো। দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি দেখাচ্ছি। দাঁড়াও আরাম করে দেখো। দাঁড়াও। একটু মুখে দিয়ে দেবে নাকি? মেঘে না। রূপচর্চা একেবারেই করি না, নিজের গোলাপ জল বলে একটু যদি করতে পারি। একদম এটা আমি কাঁচের একটা আমার জারে রেখে দিচ্ছি। এটা এরকমভাবে রাখলে এখন অনেক দিন যাবে, এটা ঠান্ডা হোক। আর এই জিনিসটাও এখন ওয়েস্ট করবে না তো। না, এই জিনিসটাও এখন ব্যবহার করা যাবে। এটা নিগড়ে পরে দেখুন গোলাপের পাপড়িগুলোর কি কালার হয়ে গেছে দেখুন। পুরো রেড ছিল না। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে পরের আবার একটা ভিডিওতে। টাটা।